हेलो बच्चों, so let's read the question. The question says select the correct pair. First column में दिया हुआ है in dicot leaves vascular bundles are surrounded by large thick walled cells. Second is cells of the medullary rays that form a part of the cambial rings. Third, loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming the lens shaped opening in the bark. And fourth, the large colorless empty cells in the epidermis of the grass leaves. So option कॉलम बी में दिया हुआ है कंजंक्टिव टिश्यू, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, सब्सिडरी सेल्स. So option A is A, option B is B, option C is C, option D is D. So the key concept for this question is monocot and dicot leaf. सबसे पहले let's come to the monocot leaf. Monocot leaf जो होता है this is isobilateral. Isobilateral का मतलब कि जो स्टोमेटा होता है it is present on both the side of the leaves. Stomata present on both sides, on the both surfaces of the epidermis. मीजोफिल यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होता. मीजोफिल जो होता है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होता इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा. यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं ग्रासेस. ग्रासेस में एडैक्सियल एपिडर्मिस जो होता है, एडैक्सियल एपिडर्मिस the adaxial epidermis, there are some cells which are along the vein. There are some cells which become large, empty and colorless. इनको बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं. बुलिफॉर्म सेल्स. सो बुलिफॉर्म सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है when they are turgid, when they are turgid ये लीफ सरफेस एक्सपोज करता है and when they are flaccid they curl the leaf surface and minimize the bottlenecks. Second is the dicot leaf. डाइकॉट लीफ में मेन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद प्रेजेंट होता है मीजोफिल. यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स होते हैं they are basically present in the upper and lower epidermis. अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस. इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. दे आर मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. एंड दो टाइप के पैरेन्काइमा यहाँ पे मिले जाते हैं. फर्स्ट इज द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड सेकेंड इज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. थर्ड इज द वैस्कुलर सिस्टम. वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आता है. बट डाइकॉट लीव्स एंड स्टेम दोनों में ही जो पैरेन्काइमा बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम होता है, the parenchyma between the xylem and phloem, it is called the conjunctive tissue.
कंजंक्टिव टिश्यू पे लगा था. So coming back to the question, पहला पेयर दिया हुआ है in dicot leaves. The vascular bundles are surrounded by large thick walled cells, which is called the conjunctive tissue mode. Conjunctive tissue जो होता है, it is basically the cells which are present, parenchyma which is present between the xylem and phloem. Second is the cells of the medullary rays that form a part of the cambial ring is called the interfascicular cambium. This is absolutely right. जो medullary rays होते हैं, medullary rays are basically the radial bands of parenchyma cells. They are the radial bands of parenchyma that extend from the pith that extend from pith to periphery. So this is right. And ये जो होता है, this is a part of the stem, not leaves. ये stem का part होता है. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम भी स्टेम में प्रेजेंट होता है, जो सेकेंडरी टिश्यूज बनाता है. थर्ड इज loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming lens-shaped opening in the bark. That is not called spongy parenchyma. They are called the complementary cells. And large colorless empty cells in the epidermis of the grass substituting नहीं होता, ये bulliform cells होता है. So B is the correct answer. So the final answer for this question is option B. Hope you understood well. Best of luck.